Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड इयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई और MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक करदेव और चैनल को सब्सक्राइब करदेव यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन बेल आइकन को ये ऑल सेट करदेव तापर वीडियोज क्लारिटी बढ़ाई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज PDF नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव एंड ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन ए विषय पढ़ा फास्ट देखा डेरिवेटिव देख आम जो फोरियर ट्रांसफॉर्म करूला गोटे फंक्शन ओमेगार इट वाज कमिंग आउट टू बी 1/√2π देन इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी ft e टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी dt एवं या आम कौन करवा डेरिवेटिव नेबा ओके विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा ताहले डेरिवेटिव नहीं गला 1/√2π कांस्टेंट अच्छी बाहर को पलि आसला ताहले देख एबे d बाय d ओमेगा जो एठी करूछु एटा पसिगला भीतर को ओके आउ एफ टी ऊपर तो एटा डिपेंड करिवो नहीं सो एटा एक्चुअली कैरी आउट हबो e टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी ऊपर ओके सो याको एबे हमें डिफरेंशिएट करबा सो दैट वी आर गेटिंग माइनस आई टी ओके माइनस आई टी किंतु टी टा बाहर को आसी परिबो नहीं बिकॉज विथ रेस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन अच्छी माइनस आई केवल बाहर को पळे आसिला ओके सो यार फाइनल वैल्यूटा देख आसुची एतिकी माइनस आई 1/√2π देन इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी टी एफ टी e to the power minus I omega t dt that means minus I into the Fourier transform of TFT এটা দেখো দেখলে লাগুচি যে TFT র Fourier transform আসছে okay so differentiating the above equation suppose for n number of times हमें थोड़े याकू differentiate करला suppose n times हमें differentiate करिबा ताहले dn by d omega n of the function f omega will give you minus I to the power n then the Fourier transform of t to the power n ft okay eta asila yaro general formula now the Fourier transform of a derivative देखो प्रथमे सेम कथा Fourier transform गोटे फंक्शन ft रो एज इट इज आम लिखिदेला एबे f dash t रो आम माने जोटा होची डेरिवेटिव ft रो तार Fourier transform बाहर करबा ठीक अछि सो f dash t यार Fourier ट्रांसफॉर्म आम यही हिसाब से आमर जोटा कि जनरल फॉर्मूला अच्छी से हिसाब से लिखिदेला एबे याकू इंटीग्रेशन करबा बाय पार्ट्स रे ओके सो बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन रे देखो यही हिसाब से आम याकू सजे कि लिखिदेला ओके देन वी ट्राई टू सिंप्लीफाई इट ओके सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी आर गेटिंग दिस मच ऑफ रिजल्ट ओके सो इठी देखो गोटे जिनस एफ टी we have assumed it to be approaching towards 0 as t approaches towards infinity so ei jo first term ta ethi amar achi so yaku ame dekhiba jodi ft ro value 0 आड़ को approach करिवो ताले amaro पाखरे एबे रहिला कोन ei second term ta only रहिला okay so I omega एठी अछि okay then 1/√2π एठी बाहरे अछि then e to the power माइनस आई ओमेगा टी एफ टी डी टी जोटा कि भितर थिला एज इट इज लिखिदेला आम सो फोरियर ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव देयर इज एफ डैश टी या को आम लिखि परिबा एबे देखो आई ओमेगा विथ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी ओके दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी दैट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू आई ओमेगा एफ ओमेगा ओके सो एबे जदि आम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेबा ताले आई ओमेगा दुई थर आसीबो ओके सिमिलरली याको रिपीट जदि करिवा फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स ताहले Fourier ट्रांसफॉर्म ऑफ f n t हे जबो i ओमेगा टू द पावर n f ओमेगा ओके सो एटा असला जनरल जोटा कि Fourier ट्रांसफॉर्म एबे जदि sin और cosine ट्रांसफॉर्म नेबा हमें डेरिवेटिव्स रो ताहले मध्य f s ओमेगा माने sin ट्रांसफॉर्म याको हमरो जनरल फार्मूला कहउची एति कि ताहले एबे फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश t याकू भी सही हिसाब रे हमें लिखि परिबा अगेन वी गो फॉर द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स
okay, and try to simplify it. Okay, देखो by parts रो एठी simplification again, the value of ft will approach towards 0 as t approaches towards infinity. তাহলে এটি লক্ষ্য করো এই যে ফার্স্ট টার্ম রে upper limit at t equal to infinity ft will approaches towards 0, তারপরে lower limit at t equal to 0 this sin omega t becomes sin 0 that is also equal to 0. তাহলে এই ফার্স্ট টার্মটা টোটালি 0 হয়ে যাব in both upper and lower limit and we are left only with the second term. okay, so এই যে second term को এবে লক্ষ্য করো, this is nothing but minus omega into this quantity is nothing but fc omega, that is the cosine transformation. So our final value আসিলা কেতে sine transformation of f dash t is equal to minus omega into the cosine transformation, right? আচ্ছা, এবে ଆମେ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଯେଉଁ ଏଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଟିର କୋସାଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ବାହାର କରିବା। ପ୍ରଥମେ एफ टी रो कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन जदि आमे देखा दैट इज एफ सी ओमेगा इज दिस मच आमे ऑलरेडी देखिला। ताले एबे एफ डैश टी यार कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन एज पर द फॉर्मूला आमे लिखि देला एंड अगेन वी ट्राई टू कैरी आउट दिस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, एबे सेम जिनस here also ft will approach towards 0 it is जो first term रे as t tends to infinity, but however এটি upper limit রে তো এটা 0 হয়ে গেলা, lower limit যদি দেখিবা t equal to 0 here cos omega t becomes cos 0 that is 1, so এটি ଆମର ରହିଲା f0। ओके, ଆଉ ଏଠି ତାପର ଟର୍ମଟା ରାଇଟ୍। ସୋ ଏଠି ଦେଖ ଆମର ଟର୍ମ ଏଠି ମାଇନସ୍ 2/π स्क्वायर रूट f0 এটা ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଆସିଲା, ଆଉ ଏଠି ଆସିଗଲା omega into this much of quantity which is nothing but the sine transformation that is fs omega. So final value amar asila kete fc f dash t equal to minus 2/π square root f0 plus omega fs omega. okay, तापर जदि आमे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नौचु तारो साइन ट्रांसफॉर्मेशन बाहर करछु f डबल डैश t। okay, so देखो according to the sign transformation आमे याकु लिखि देला, then we go for the integration by parts again f dash t will approach towards 0 as t tends to infinity माने ए upper limit रे, lower limit रे भी एटा sin omega t अछि again 0 हो जिवो, ताले फर्स्ट टर्म टोटली 0। ओके, जेमति हमें ऊपर देखुतिला we are left with the second term। ओके, so second term रहिला एतिकी this is minus omega into nothing but your fc of f dash t that is the cosine transformation of the first order derivative, right? So यार भैल्यूटा आम ऊपर पाई दिस मच। ओके, सो एबे याकू टिके आम जदि सिंप्लीफाई कर दबा सो वी आर गेटिंग द फाइनल रिजल्ट लाइक दिस। ओके, सिमिलरली फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव रो आम बाहर करि परिबा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पई ए हिसाब रे आम लिखि देला, देन एठी देखो we again go for the integration by parts f dash t approaches towards 0 as t tends to infinity। okay, so एठी एटा 0 हो जिवो upper limit at t equal to infinity, however lower limit at t equal to 0 cos 0 हो गला 1 we are having f dash 0। ओके, सो एटा फर्स्ट टर्मटा टोटली 0 हबो नै रहिबो माइनस f dash 0 रहिबो। ओके, सो एटा हमरो आसीगला मल्टीप्लाई हो गला 2/π स्क्वायर रूट सहित आउ एठी ओमेगा इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 2/π इनटू दिस मच। ओके, व्हिच इज नथिंग बट द साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f dash t। ओके, याकू एबे यार वैल्यूटा जो पाइथिला लिखि दबा जदी माइनस ओमेगा fc ओमेगा। सो फाइनल वैल्यू देखो हमरो आसीगला सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पाई दिस मच। ओके, सो एटा देखिला हमें फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड आल्सो डेरिवेटिव ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अच्छा तापर एबे देखिबा how to represent the Dirac delta function as a Fourier integral. So Fourier integral if represented by fx equal to 1 by 2 pi integration minus infinity to infinity e to the power minus I omega x d omega, then integration minus infinity to infinity ft e to the power I omega t dt। suppose एमती हमें इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कला। now by reversing the order of integration, reversing order माने देखो एटी आमे आगो इंटीग्रेट करबा को चेष्टा करबा with respect to ओमेगा। ओके, सो ओमेगा रो जति की टर्म अछि ताको हमें कर्ली ब्रैकेट भीतर रखि देला। सो 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी e to the power
I omega t minus x of d omega এটা first carry out করিবা তাপরে with respect to t ইয়াকু integrate করিবা but we know that the useful property of Dirac delta function is given by the formula कौन से यार property देखो fx equal to integration minus infinity to infinity ft delta t minus x dt ওকে এটা হচ্ছে ইয়ার মেন ফর্মুলা ডিরাক ডেল্টা ফংশনର সো ଏବେ ଯଦି ଇକ୍ୱେସନ୍ 2 ଆଉ 3 କୁ ଆମେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା we get the expression for the Dirac delta function okay that is delta t minus x is nothing but what is written inside this curly bracket okay so this is our Dirac delta function okay as per the Fourier transform and this equation 4 is the representation as I said of the Dirac delta function as a Fourier integral যদি এটি x র ভ্যালু আমি 0 পুট করদেলা তাহলে we are having delta t which is equal to 1 by 2 pi integration minus infinity to infinity e to the power I omega t because এটা 0 হয়ে গেল then we have the d omega okay or simply as I said 1 by 2 pi minus infinity to infinity e to the power I omega t d omega okay so this is all about the Fourier transformation of derivative and that of the representation of Dirac delta function. Thank you.